my all classmates. We are here to give a seminar on endocrine system. The body contains two kinds of glands. First one is exocrine and second one is endocrine. Exocrine, secretion of product into ducts, and endocrine, secretion hormones into the extracellular space of direct in blood. Now, endocrine system have 5 types of glands. First one is pituitary gland, second one is thyroid gland, and third one is parathyroid gland, and fourth one is adrenal gland, and last fifth one is pineal gland. Now my friend Asif will continue. First gland is pituitary gland. Pituitary gland is a link between nervous system and endocrine system. Pituitary gland is a hypophysis or master gland of our endocrine system. Pituitary gland secretes several hormones that control the our endocrine system. Pituitary glands are of two types: anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary Not two types. There are two parts of pituitary glands. जो आगे होता है उसको बोलते हैं anterior, पीछे वाले को posterior. Anterior pituitary is also known as adenohypophysis, and posterior pituitary is also known as neurohypophysis. Anterior pituitary secrete hormones, leptotropes, gonadotropes. Somatotropes, leptotropes, corticotropes, thyrotropes, and gonadotropes. Somatotropes secrete GH women growth hormone, GHH. आप लोग उस टाइम पढ़े सुने तैयारी अच्छी की इन लोगों ने. This is ready-made revision for you people. वुमेन ग्रोथ हार्मोन जो वो रेगुलेट कराता है बॉडी के ग्रोथ को, हेल्प कराता है बॉडी को ग्रोथ करने में. दूसरा है लेप्टोट्रॉप्स से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है और जो कि इनिशिएट कराता है मिल्क रिजेक्शन, मतलब मिल्क फीडिंग में मिल्क का सीक्रेशन कराता है लेप्टोट्रॉप्स. थर्ड है कॉर्टिकोट्रॉप्स हार्मोन सीक्रेट करता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इट हेल्प इन स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है. फोर्थ इज थायरोट्रॉप्स सीक्रेट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन होता है उसमें हेल्प कराता है. गोनेडोट्रॉप्स 2 टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. बहुत बढ़िया. ये जो है ये हार्मोन करते हैं अपने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को हेल्प करते हैं. अपना आगे इसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस. ये सीक्रेट करती है 2 टाइप के हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और ADH. इसका सिनोनिम क्या है एंटीरियर वाले का? एंटीरियर का एडिनोहाइपोफाइसिस. You must note down this. This is the nutshell of whole chapter. You must note down. Anterior पिट्यूटरी का एडिनोहाइपोफाइसिस. posterior is न्यूरोहाइपोफाइसिस. they release oxytocin or ADH. ऑक्सीटोसिन हेल्प कराता है कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी. ये हेल्प करता है मदर्स के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में, और आफ्टर बर्थ ये मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन में हेल्प करता है. स्टिमुलेट करता है. उसके बाद है ADH डिक्रीज यूरिन आउटपुट करता है. ठीक है ना. अब इसके बाद फुल फॉर्म क्या है ADH का? एंटी डायरेटिक हार्मोन. ठीक है. अब इसके बाद है पैराथायरॉइड. बहुत बढ़िया, जबरदस्त. इनमें से काफी अच्छा, ऐसा मुझे लगता है.
Thyroid gland, it is just located below the larynx, which is also called voice box, and it secretes two types of hormone: thyroid hormone and calcitonin hormone. Thyroid hormone, there are two types of hormone: T3 hormone and T4 hormone. Their function are regulate growth, development, and activity of nervous system. And calcitonin hormone function are lower blood level of calcium and phosphate by accelerating their absorption into bone. मतलब ये ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है उसको लो कर देता है बोन में एब्जॉर्प्शन करवा कर. ठीक है. फिर है पैराथायरॉयड ग्लैंड. इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड इसमें हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करता है. ये ब्लड, इसका फंक्शन है, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल को बाय डिक्रीजिंग ब्लड फॉस्फेट लेवल. और next is pancreas. They secrete in this four type of cell present: alpha cell, beta cell, gamma cell, and F cell. Delta cell and F cell. Alpha cell secretes glucagon and beta cell secretes insulin. Glucagon function is it increase blood glucose level by मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर ये ग्लूकोज by breaking down glycogen into glucose. Yes, that is called glycolysis. And second is by gluconeogenesis. ठीक है. It lowers blood glucose level by transportation glucose into cell. And delta cell, it is also called growth hormone inhibiting hormone or somatostatin hormone. It inhibits secretion of insulin and glucagon. And F cell, pancreatic polypeptide cell. It regulates release of pancreatic digestive enzymes. Then adrenal cortex. These are including three types of hormone. Firstly is mineralocorticoids hormones, mainly in John glomerates, and second is glucocorticoids hormones. They are mainly present in vesiculata cells, and third is adrenogen. Firstly, mineralocorticoids hormones. They are mainly in John marina cells, and they are increase in level of sodium and water and decrease in level of potassium. Glucocorticoids mainly in vesiculata cell. They are increase in rate of protein catabolism and resistance to stress and depress to immune response. And third is androgen. They are mainly in They suppress stress and they depress immune system. Then third is androgen. They are mainly in John reticulata cell, and level of hormones secreted by adult men are so low comparison to amount produced by that their effect usually significant. In female, adrenogen may contribute to sex drive and libido. Then second is adrenal medulla. They are two type of hormone: epinephrine and norepinephrine. Norepinephrine. It is Also also called called as adrenaline and noradrenaline. Sympathetomimetic that produce effect that mimic those of sympathetic division and autonomic. Sympathomimetic means drugs which mimic or copy the action of sympathetic nervous system. So the word is sympathomimetic, जो mimicry करते हैं sympathetic nervous system. And autonomic nervous system during stress. Then next is pineal gland. Only one hormone they are secret, melatonin. Less melatonin is liberated is Daytime. strong sunlight. According to following system: first, light strike on eye, retina, stimulate photoreceptor. Then retina neuron activated by photoreceptor, transmit impulse and suprasympathetic nucleus is hypothalamus. Nerve impulse are transmit to the superior cervical
ganglia, and finally to going to pineal gland. Thank you.